Dear students, today we are going to learn class 10th General English lesson 2, The Power of Determination. This lesson is written by Bert Dubin. The power of determination means दृढ़ संकल्प की शक्ति. Before going to the lesson, let's learn some introduction about the lesson. It is a true story about athlete Glenn Cunningham, who was horribly burned in a schoolhouse fire at the age of 8. Doctors predicted he would never walk again. Determined to walk, Glenn would throw himself off his wheelchair and pull his body across the yard and along a fence. 22 months later, he took his first step and through sheer determination learned to run despite the pain. The power of determination ग्लेन कनिंघम के जीवन की एक सच्ची घटना है. 8 वर्ष की उम्र में एक स्कूल में आग लग जाने के कारण उनका शरीर काफ़ी जल चुका था. डॉक्टर लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया था कि यह कभी भी चल नहीं सकेगा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अपने आप को व्हीलचेयर से नीचे गिरा करके फेंस के खंभों को पकड़ करके वे चलने का रोज अभ्यास करते थे और धीरे धीरे 22 महीना के कठिन मेहनत के बाद वे अपने आप को चलने में सक्षम बना लेते हैं. तो ये एक अच्छी घटना है जो वाकई सारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणाप्रद है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन. दृढ़ संकल्प की शक्ति. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. गांव के एक छोटे से विद्यालय भवन को एक पुराने फैशन के तोंद के आकार की कोयले की सिगड़ी से गर्म रखा जाता था. यह काम एक नन्हे बालक को दिया गया था जो प्रतिदिन शिक्षक और उनके साथियों के आने के पहले जल्दी आकर आग जलाकर कमरे को गर्म किया करता था. One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. एक दिन प्रातः शाला आने के बाद विद्यालय भवन को आग की लपटों से घिरा हुआ पाया गया. उन्होंने देखा जो बालक रोज स्कूल को गर्म करता था वह अचेतन पड़ा हुआ था. उन्होंने उस अचेतन बालक को जलते विद्यालय भवन से आधे से ज़्यादा मृत खींचकर बाहर निकाला. उसके शरीर का आधा भाग बुरी तरह से झुलस गया था और उसे पास के गांव के अस्पताल में ले जाया गया. Now we will go to the paragraph number 3. From his bed, the dreadfully burned, semi-unconscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. बुरी तरह झुलसे अर्धचेतन नन्हे बालक ने अपने बिस्तर से डॉक्टर को अपनी माँ से धीमे आवाज में बात करते हुए सुना. डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि उसका पुत्र निश्चित ही जीवित नहीं रह पाएगा, जो कि ठीक भी होगा क्योंकि
भयानक आग ने उसके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। But the brave boy did not want to die. He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. किंतु यह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। किसी तरह डॉक्टर के लिए अद्भुत रूप से वह निश्चित ही जीवित बच गया और धीमे स्वर में डॉक्टर और माँ को बात करते हुए सुना। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड so much flesh in the lower part of his body, it would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. चूंकि आग ने शरीर के निचले भाग के मांस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, तो बेहतर यही होगा कि वह मर गया होता, क्योंकि वह आजीवन अपंग ही रहेगा तथा अपने निचले भाग के अंगों का उपयोग वह कभी नहीं कर पाएगा। Once more the brave boy made up his mind he would not be a cripple, he would walk. But unfortunately from the waist down he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. एक बार फिर उस बहादुर बालक ने निश्चय किया कि वह अपंग नहीं रहेगा, वह एक दिन चलेगा फिरेगा, किंतु दुर्भाग्य से कमर के नीचे के हिस्से में घूमने या चलने फिरने की क्षमता नहीं रह गई थी। उसकी पतली टांगें बेजान हो गई थी। Now we'll go to the next paragraph. Ultimately, he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. अंततः उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रतिदिन उसकी माँ उसकी नन्ही टांगों को मालिश करती थी, किंतु कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं था। तो भी उसका दृढ़ निश्चय कि वह हमेशा की तरह चलेगा फिरेगा, उसका संकल्प दृढ़ था, मजबूत था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. जब वह बिस्तर में ना होता, वह व्हीलचेयर में पड़ा रहता। एक दिन धूपदार दिन को उसकी माँ ने उसको ताजी हवा लेने के लिए बाहर ले गई। उस दिन व्हीलचेयर में बैठे रहने के बजाय उसने अपने आप को कुर्सी से नीचे गिरा दिया और वह घास के पार अपने को खींचने लगा। उसकी टांगें उसके पीछे पीछे घिसट रही थी। Now let's go to the next paragraph. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort he raised himself up to the fence. Then stake by stake he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all round the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. उसने उनके घर की श्वेत नोकदार छड़ वाली बाड़ तक अपना रास्ता तय किया। बड़ी कोशिश से उसने अपने आप को बाड़ के ऊपर उठाया, फिर एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक अपने आप को बाड़े के साथ साथ खींचना शुरू किया।
उसने निश्चय किया कि वह चलेगा। उसने वह कार्य प्रतिदिन करना जारी रखा तब तक बाड़े के किनारे किनारे एक पतली गली ना बन गई हो। उसे अपनी टांगों में जीवन विकसित करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने टांगों में जीवन का संचार जरूर होगा। Ultimately, through his daily massages, his iron persistence, and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run. अंततः उसकी प्रतिदिन मालिश और उसकी लोहे के समान दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसने खड़े रहने की क्षमता प्राप्त कर ली, फिर रुक रुक कर चलने की, फिर स्वयं अकेले चलने की और बाद में दौड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college he made the track team. वह पहले तो विद्यालय चलकर जाने लगा, फिर दौड़कर विद्यालय जाने लगा, फिर दौड़ने की से उसको आनंद प्राप्त होने लगा, इसलिए वह दौड़ने लगा। फिर कॉलेज में उसने अपना एक ट्रैक दौड़ने का टीम बना लिया और उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने लगा। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. फिर कुछ दिन बाद मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में वह नवयुवक जिसके जीने की भी उम्मीद नहीं थी, जो निश्चित ही कभी चलने लायक नहीं था, जिसके दौड़ सकने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, वह दृढ़ निश्चय युवक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम विश्व का सबसे तेज मील धावक बन गया। Now let's see about the lesson. Here is a true story of Dr. Glenn Cunningham. He became severely disabled in a fire accident in his childhood. The lesson highlights the power of determination he had and how this power enabled him to struggle against and overcome the challenges that stared him in the face. Ultimately, he became the fastest mile runner of the world. ये डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के जीवन की सत्य कहानी है। वह बाल्य अवस्था में एक अग्नि दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। यह पाठ उसके दृढ़ निश्चय की शक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है और बताता है कि किस तरह उसकी शक्ति ने उसे चेहरे को घूरती चुनौतियों से जूझने व उस पर विजय पाने की शक्ति दी। अंततः वह विश्व के सबसे तेज मील दौड़ने वाले धावक बन गए। Now we will see the moral of the story in हिंदी। 1934 में वह नवयुवक जिसके जीने की भी संभावना नहीं थी, जो निश्चित थी कभी चलने लायक न रहने वाला था, जिसके दौड़ने की तो उम्मीद भी नहीं थी, वह दृढ़ निश्चय युवक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम विश्व के सबसे तेज मील धावक बने। यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है, जो यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप जब यह निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें अपना मंजिल प्राप्त करना है, तो यह दृढ़ संकल्प हमें सफल बनाता है। इस दृढ़ संकल्प को निरंतर बनाए रखना चाहिए। नाउ लेट्स सी द ग्लोसरी। पोट बेलीड, मटके के समान। इनगल्फ, चारों तरफ से ढक जाना। फेंट, मूर्छित। क्रिपल, अपंग। मोटर, गति से संबंधित नसें। अमेजमेंट, विस्मय, आश्चर्य। डैंगल, लटकना। कन्फाइन, एक ही जगह पर रहना। पिकेट, बाड़े के नुकीले खंभे।
स्टेक, किसी वस्तु को संभालने वाला खंभा। परसिस्टेंस, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष। रेसोल्यूट, दृढ़ संकल्प। Now let's do the exercises. A. Match the words with their meanings. So this will be homework for you. Please read the exercise properly and do the homework. And please write down the exercises in your notebook. Now B. Read the sentences carefully and find out the antonyms of the following words given below. This also will be homework for you. So please find out the word opposite of given on the top 5 words are there in bold letters. So do it. Now questions and answers. Question number 1. What was the duty of the little boy? Answer. The duty of the little boy was to come to school early each day and to start the fire and warm the room before his teachers and classmates arrived. Question number 2. What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? Answer. When the boy was taken out of the burning school building, at that time he was more dead than alive. Question number 3. Why was the boy sent to hospital? The boy was sent to hospital for treatment. Now let's do the question number 4. What was the opinion of the doctor about the burnt boy? Answer. The doctor's opinion was that the boy would surely die. Question number 5. What did the boy decide after listening that he would surely die? Answer. He made up his mind that he would survive. Question number 6. What was the opinion of the doctor after the boy had survived? Answer. The opinion of the doctor was that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. Now we will go to the long type of question and answer. Question number 1. What was the effect of the doctor's words on the terrible burnt boy? Answer. The brave boy made up his mind that he would not be a cripple, he would walk. Question number 2. How did the mother help the boy to overcome his disability? Answer. His mother was also brave. She wanted that he should overcome his disability. Every day she would massage his little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. Now question number 3. How did the boy make himself able to walk and run? One day the boy raised himself up on the fence. After this he started to make practice of walking every day around the yard beside the fence. At last, through daily massage and his iron persistence and firm determination, he developed the ability to stand up, then to walk and run. Question number 4. Describe the factors which enabled the boy to become the world's fastest mile runner. Answer. The factors which enabled the boy to become the world's fastest mile runner are following. First, his resolution to survive. Second, his firm determination not to be a cripple. Third, his courage to struggle against troubles coming in his way, to stand up, walk and run. Fourth, his mother's nursing. Fifth, his interest in running. Question number 5. What do you learn from the story? Answer. We learn from the story that through firm determination we can face any kind of troubles and conquer them.
Nothing is impossible if we have firm resolution. So please stop the video and write down the question and answers. Now complete the statement choosing the correct options. So we have done the lesson, so please do this exercise according to your understanding and choose the right option. Stop the video and write down the questions. Now we shall do the fill in the blanks. These sentences are of simple past tense, so just fill the blanks with the simple past form of the verbs given in the bracket. Thank you. Keep on learning with me. Have a nice day.